Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Yes, Prabhu, no problem. There is already Jeev Pawan Prabhu has raised his hand. Jeev Pawan Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, Dandvat Pranam. Thank you, Prabhuji, for this very nice class, Prabhuji. We got to learn so many points. And first of all, thank you to Gopimar Prabhuji and Vrajpriya Mataji for giving us your valuable association. Prabhuji, I had one question regarding you explained in the class, Prabhuji. So, Prabhuji, like my question is like how to practice and be in this consciousness of four rules you explained. Like the first one to depend on Lord, second be in service attitude, third one be grateful like in gratitude to Lord and all others, and the fourth one is to give before like to get anything. So, how to practice and be in this consciousness of four rules you explain, especially when we are affected by people or circumstances due to three modes of nature, like in sense of like being put in a difficult situations, still trying to follow these four principles you explained, Prabhuji. Please, Prabhuji, Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna, bro. Thanks for this question. Yeah, what you said is very correct, Prabhu. बहुत मुश्किल होता है फॉलो करना, मगर the important thing is if you know it is theory and if you start contemplating on it, somewhere or other it strikes to follow. The knowing is the first most important. So in the knowledge also what they say is what we have to know and then how we have to know. Like what is knowledge? That okay, what we have learned is knowledge, right? We have to be humble, we have to be gratitude, we have to apply our mind, we have to be dependent. That is what. And then only when you contemplate on what, then how thing comes. Then we will question ourselves how we can do it. And this is exactly question that you have got it right. How? And then once we know how to do it, then we have to see how to apply it. These are the three stages, right? So to answer your question in straight, I don't have a perfect answer to that. Beyond my capability, but I'll tell by experience, right? One is I'll tell my personal experience is that to read Prabhupada books, disciples of the Prabhupada books to the extent possible, and to discuss amongst the devotees. That is a very powerful tool for us to get an inspiration and try to definitely you're all doing it and try to be as much connected to the devotees as possible, despite some issues that we may get between the devotees. But knowing the power of the association of the devotees and knowing the power of what we can get from Srila Prabhupada's purport, automatically, without our knowledge, our life turns around Krishna. And when we put Krishna into the middle of things, automatically our activities change that way. So in another way, you said how to do it, right? So contemplating on some of the shlokas that we like it. Like for example, I've told this Gresh Avasito Rajan, right? I often quote this shloka. Okay, so pick up few shlokas that may become your favorites, and as you adopt them, as you think about them, as you move forward, automatically somewhere something happens. Like for example, I also personally quote one shloka of Bhagavad Gita 630. Yomam pashati sarvatra sarvam cha mai pashati tasyaham na pranachami sachame na pranachami. The one who sees me everywhere and everything in me,
I'm never lost nor he is lost to me. This is my favorite shloka, and I keep meditating on it. So these are very simple things, right? So when we dwell on 2 or 3 shlokas that we know and we are very keen, and automatically the depth of it slowly we get to know, and naturally that like what you do is what you think, right? And what you think is what you get it as a knowledge. And another thing that I keep repeating is like I'm just giving an answer based on my experience, right? How do I try to do it? I'm not doing it perfectly, but at least I'm trying. The other thing is I always remember what should be my prayer. How can I keep God at my center? If I keep God, like Yudhishthira Maharaj kept God at center, right? And so that's why he could follow everything. For us, we are in such a difficult situation materially, so many problems surround us, very difficult with 3 modes of material nature, temptations. How can we do it? So I pick up my own personal prayer that I learned by reading somewhere. Look back and thank God, look around and feel God, look ahead and trust God. That prayer you can change it to look back and thank Krishna, look around and feel Krishna, look ahead and trust Krishna. Like if you see Yudhishthira Maharaj, he looked ahead and trust Krishna, right? Whatever. These are the very simple lines, but if you keep on meditating, keep on taking it as a lifeline prayer of ours, so the understanding, the application deepens and deepens and deepens, and somewhere, even with all our faults, with all our influence of 3 modes of material nature, somewhere the change will come. So look back and thank Krishna means what? Like I should be able to sincerely bow down before Guru or before Krishna and say, Krishna, I really thank you. Can I do that? On the day when I'm full enthused हो जाता है, जाके बोलता हूँ कृष्णा धन्यवाद, आपने सब कुछ कर लिया, एकदम से फिर मन में होता है अरे यार ये नहीं दिया कृष्णा ने, वो मैं तो मांगा था, मेरी उतना ही मिला था, ये क्या है? So that full thanking has not even come after 15 years or I'm practicing this, but then what happens is it helps us to remember to thank somebody who is giving, right? Thoda bahut. That is one thing. Look around and feel Krishna. That helps us because sometimes even in our devotional life, even in our office lives, some things go very unfavorable to us. कभी-कभी हम लोग गलत कर देते हैं, कभी-कभी दूसरों का गलती से हमको झेलना पड़ता है दुख. So but then after settling down, after initial reactions are over, this thing, Yomam Pashati Sarvatra. Let me try to see everything in the context of God. Maybe whatever I think is unfavorable has happened to me, unfair has happened to me, there is a reason. There's a story behind each of these. And I don't know the story yet, end of the story. So I'm getting unnecessary. So look around and feel Krishna. And in a helpless state, or in a state where he has to guide me, I have to get fuel to move on. Look ahead and trust Krishna because everything will change in this world. That is one thing that we remember. So Krishna will change everything. It's only everything is temporary, right? He has a plan for us. We don't know that plan. So what I'm into trying to say, Prabhuji, is that if you take some few things which attract us personally, and everybody has their own favorites, right? Try to, when we read Prabhupada purports or points, some things become perfect. Something becomes your favorite, right? So, and that will help. So what I will do is, after this, I'll send it to Gopi Manohar Prabhu. One thing which has inspired me, there's a devotee by name Payal Mataji. So she has heard one Prabhupada's disciples called Narayani Mataji on how to read Srila Prabhupada books. Actually, and she has basically read that, listened to that article, lecture, and she has documented it. And it's a very 9 points, basically 9 or 8 points, very interesting points. If we follow that simple points, not only when we read Srila Prabhupada books or when we listen to somebody, also we can apply them, and that will slowly help us to be strong enough to sustain these very difficult temptations caused by the 3 modes of material nature. It's very difficult. Even Prabhupada has expressed that it's very difficult. War against Maya is difficult. Arjuna has said it's difficult. So it's not only for us. And other thing is that one of my very dear my brother in satsang, long time back, when I also asked a similar question, like you, Prabhu, almost 10 to 12 years back, my dear friend Radhapad Pankaj Prabhu has taught me one shloka. It's a Kabir ka Dohe, which I again remember. This has become my favorite thing.
Once it's something becomes one's favorite, you dwell on it, right? He says, Karatu karatu abhyasu jadamati ve sujan, rasari avat javat shilpar kare nishan. It's a simple shloka. Practice, practice, practice on what you think. So for me, the practice is more and more contemplation of 630, more and more contemplation on the three lines of prayer that I have, and more contemplation on the shloka that we learned today, 7:14:2. We don't need many. We can, and sometimes when we read books like Gaurang Prabhu's book I'm reading, I have some of the gratitude thing struck me like a bolt. Probably I was not being grateful to others for the whatever I received. I'm not being grateful, or I don't know, it struck me like a bolt. So I said, I want to remember this forever in my life. Particularly the point that if I don't get the gratitude, if I would not have received the gratitude, what could have been my situation? Probably that point I was never bothered. You know, jo bhi aaya lata. Sometimes when somebody even does it, we say, oh, I deserve it, yaar, isliye wo de diya mujhe. So that attitude. So I don't know, I've given you a long answer, but in brief, pick up something of your favorites when reading, listening, seeing from people, and try to grab it. Put it in your mind and keep on dwelling on it. Like other thing that I told in this session is that Chaitanya Mahaprabhu told Rupa Goswami, Rupa or Sanatana Goswami, one of them, that Maryada Rakshana is Abhushana. So that gave me that, you know, your behavior is your ornament. Nothing, there's no need for any other ornament. You don't need to be anything but your behavior. So like that, Prabhu, I think that will help us to change our life, and also not only we change, while we are changing, we can influence someone else's life also. I don't know whether I've answered it or wrong, correctly or wrong, I'm not sure, but it's a long answer. Thank you, Prabhuji. Bow down at your lotus feet, Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for giving this very nice sutra in the morning. Look back and thank Krishna sincerely. Bow down to Guru Maharaj and Krishna. Even if not fully thanking, but there is a reason, or remembering Krishna for because there is a reason or story behind any unfair doing, and then look around and feel Krishna that he has always a plan for us. We may not know. And the last sutra is look ahead and trust Krishna for everything. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Actually, you have 5 minutes. I'll tell something very extremely useful thing in the same context. I'll just show a demo. Sorry, I'm taking time, but yeah, you see this box? You see something? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. So this is the association of devotees is so very important. So this box came into my life during COVID time, and the sheets are there coming. So I'll just in brief tell. There's in our Bhakti Ruksha here, the place where we are. There's one family, a very sincere, very shy and very calm, quiet family, and they got impacted in COVID in the COVID beginning days. You know, now COVID comes in, everybody can easily declare. In those days, somehow the family felt, you know, not to tell anybody. They felt odd, you know, that they got COVID. So wife got it, husband got it, and husband got it very severe. And they were not telling, they were just trying to manage themselves. And he had been even hospitalized. And then he came back and still he had the repercussions of that. But luckily Mataji became okay and she was serving him. But they were in a deep tension, you know, what will happen to Prabhu. In those days, even, you know, we were seeing the death because of COVID. Very scary situation, and nobody knew what was there. I'm talking about early 2020s, in April, May kind of a thing. So Mataji was in a very deep trouble, a deep anxiety, like Prabhu said, miseries and 3 modes of material, and she was, and in that anxiety, she had a very interesting realization. Oh my God, I'm cursing every time. Why we only got this? We are only 2 people, and my husband is happening like this. But then suddenly something struck her. Oh my God, even though he's suffering, I'm also suffering. But there is something God has given us, which I'm not yet realized. I see so many people going to COVID and they have gone out. That my husband is alive. And so many people I'm seeing, they have lost the jobs. My husband's job is not lost. His company is taking care of him.
So there is something that I need to thank Krishna. So what she did, she took a simple piece of paper from that day onwards. She said, whatever I think that I have to thank Krishna, I will write it and put it in a, she has actually first put it in her wall so that she remembers, oh my God, this is what Krishna has given me today. So this is where I could attend a class, I could learn something. This is what Krishna helped me. Like that, she put all of her thing. So after the COVID and all came, when everything was there, and one day she told this story. I mean, I'm telling in brief, but she told the story so powerful. And I felt, oh my God, this is something. So then one of our congregation members said that we all have to practice. So he basically, he got inspired and he gifted us this box. This jar, and he gifted us the papers. He gifted the pen to all the members of Bhakti Vriksha to follow. And from that day onwards, I follow. Time and again, I do it. And now it's very interesting. And when I'm alone or sometimes when I have free time, I take back these slips and see, oh, what I have done and things like that. So many things happened in my life also. In the last 1 year, when we became grandparents, we went through a difficult time with our grandchild in the beginning days, and when she has to be there for 93 days in the ICU to start her life itself. A very tough time. But this helped me. So should I thank Krishna for giving a granddaughter, or should I say curse Krishna that why he has given a granddaughter to go through intensive care unit? So this helped me a lot. And then there's also a separate pouch I put now as confidential. That means if somebody opens this jar also, they will not touch that, but they can see the other. So what I'm trying to tell Prabhu is that these are the practical ways we get from a huge lesson that we get from devotee association. And this has become part of my life now. Every month or so I remember, oh, did I fill the jar? So actually recently, in March 31st, I realized so many things, good things have happened in this March actually for us in our family. I forgot to do this. That's why I told my wife today, give the day to myself without any other program. After this program, I want to be myself because I want to do this today. So just to give an example, I'm sorry I'm taking time, but it's a very interesting, practical, real life story of thanking Krishna. Not only Krishna, it could be some help that we receive from devotees. Not only Krishna or his devotees or the powerful members. Hare Krishna. Super. Thank you very much, Prabhuji. This was really a very heart-touching incident you have shared, because we go through difficulties many times, but in that difficulty, in that suffering, we really forget what all how Lord is protecting us. That is the main aspect, and we should always keep, instead of focusing on our sufferings, we should focus on that help, which is or that protection what Lord has done. So it was very nice too, and I too personally will try to follow this. Maybe I will put it on my mobile or something, because mobile is more handy. So immediately, if I think, I will start doing that and keep a folder for that, and I will try to practice this. And I've been learning many things from you, Prabhu. Like this prayer, what you said, you look around and feel Krishna, look back and thank Krishna. I've been hearing this from many years, like when we used to come to Bhakti Vriksha. So this is a really wonderful prayer, and I practically try to imbibe this. And although I don't say this prayer, but practically I try to thank Krishna whenever it is, and have trust in my difficult times, because I have been through a lot of difficult times personally, but I always have faith. Yeah, Krishna is there, he will protect me. So as I said, you had always been an inspiration for me. I've been learning a lot of things, and a lot of your instructions are still in my mind. Like I always, in my class in here, I always repeat your one point which I liked very much, and it's stuck in my head like anything. Like he said now that a devotee should always hold his hands of senior, like Chaitanya Mahaprabhu Panchatattva photo. Like he should always be holding hand of his seniors and who are below him,
that one hand down hand should be holding that juniors. So I try to follow that always, and that's the main intent. Actually, I thought it will be very nice to hear from you. And it was so many years we have been out of touch, but my just intention was to keep in touch with you, get some Krishna Katha, get some nectar, get some instructions from you. So thank you very much, Prabhuji. I'm highly obliged to you for accepting the invitation. And if possible, whenever you have time, you Mataji, please keep coming, Prabhu. I think. Sorry, I think Uddhapesh Prabhu has to say something. Uddhapesh Prabhuji, sorry. Hare Krishna Prabhu, thank you very much for a very, very wonderful class. So many instructions to follow, so many instructions to imbibe in our life. It so happened, it's coincidental. Yesterday I was, had a Bhagavad Gita class in which we are discussing about 8th chapter. So in that 8th chapter, shloka number 8.8 or 8.7, it shows how to attain Krishna. So while I was listening to your class, during that so many points came up, and it struck me that God is so merciful that yesterday I was discussing about these points, and today I am hearing a similar kind of discussion in your class. And the point which we were discussing yesterday, how to attain Krishna, and it starts from shloka number 8.8 onwards, in which it is mentioned that that acronym came up to my mind. The acronym is AIM. So when you have that AIM means aim. So aim means you have to put your activities, your intelligence and your mind if you want to attain Krishna. So you have to use your activities, your intelligence and your mind. When you put all these three things together, you can attain Krishna. This is what was the crux which I was discussing yesterday. And what you mentioned about Bhishma Pitama, there was something new which I learned yesterday, that in that same 8th chapter, there is Sat Karma Chakra, which Srila Prabhupada is explaining that how the yogis, they take the life breath and bring it to in between the eyebrows, and that's explained as Sat Chakra Yoga. So in that, I was reading one of the books in which it's mentioned this similar kind of activity was done by Bhishma Pitama. And when he was, doing this, and to do this, you have to be a celibate, you have to be a brahmachari. And we know how, that Bhishma Pitama was brahmachari throughout his life. So in that, it says that when you do this kind of yoga, when Bhishma Pitama did it, each and every arrow from his body, it just came out when the chakra was going upwards. He was taking his life breath upwards. Each and every arrow of his body was was going off, and the wound was immediately been healed before he left his body. So this was kind of an experience which I wanted to share. Hare Krishna. Thank you. Thank you very much for your wonderful class, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Take care, and thanks a lot to all the devotees, and wish you a very happy weekend, happy Krishna conscious life, and take care, and hope to see you again sometime. And thanks a lot, Gopimana Prabhu and Mataji, for giving us the opportunity. Thanks to you, Prabhuji. Wife also here, she wants to say thanks. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Yeah. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanabhyo vaishnavabhyo namo ananta koti vaishnavabhyo ki jai. Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Granth ki jai. His Grace Jagajiv Jagannath Das Prabhuji ki jai. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. So thank you very much. We will continue our regular program. We will leave you, Prabhu. Thank you. Sure. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. तो इतना जबरदस्त क्लास सुनने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बोलने के लिए. तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग अपना नरसिंह आरती करते हैं. तो प्रदीप प्रभु जी बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु, ये जो जगन प्रभु जो एक बॉक्स का दिखाया, मैं एक्चुअली थोड़ा इधर गया तो मैं एक्चुअली पूरा समझा नहीं. कैन यू एक्सप्लेन मी प्रभु प्लीज? आई एम सो एक्साइटेड. एग्जैक्टली प्लीज. एक्चुअली क्या है कि जैसे प्रभु जी ने वो जो फैमिली का
जो इंस्टेंस शेयर किया कि उनको जब कोविड हुआ था तो मतलब, और ये उस टाइम पे था जब मतलब बहुत लोगों का मृत्यु हो रहा था एकदम इनिशियल डेज में 2020 के अप्रैल मई की बात है। तो बहुत डेंजरस था, तब तो कोई दवाई भी नहीं था। आज तो लोग कोविड हो जाए तो डरते भी नहीं। तो उस टाइम पे जब उस फैमिली को, जब प्रभु जी की भक्ति दीक्षा में आते हैं, तो उनको जब कोविड हुआ तो उन्होंने किसी को नहीं बताया। उन्होंने मतलब देवर सो मच इन मतलब ना कि कैसे बताएं, क्या बताएं, हम लोग कुछ भी नहीं बता रहे थे। तो माता जी को कोविड हुआ तो वो ठीक तो हो गई, उनको कोई इतना दिख, लेकिन प्रभु जी को हुआ तो उनको बहुत ज्यादा सीवियर हुआ था और वो ठीक होके मतलब हॉस्पिटलाइज होके घर पे आ गए। तो वो हमेशा ही पूछते थे कि ये क्या है, मतलब हम लोगों की क्यों हुआ, हमें क्यों हुआ, हमें क्यों हुआ। लेकिन एक दिन जस्ट वैसे बैठे सोच रहे थे तो उनको रियलाइज हुआ कि हम लोग आजू बाजू में जब देख रहे हैं कि बहुत से लोग मर रहे हैं, तो भगवान का दया है कि हम लोग को कुछ नहीं हुआ, वी आर स्टिल अलाइव। ये एक बात बड़ा पहले था, उनको रियलाइज हुआ। दूसरा ये कि कितने लोगों के जॉब चले गए, तो बोले कि मेरा प्रभु का जॉब है, प्रभु जी बोल रहे मेरा जॉब है भगवान का कृपा से। तो ये एक जो था मतलब वरदान था एक। तो ये सब जो चीजें हैं, कभी कभी हम लोग जिंदगी में जब सफरिंग होता है हम लोगों को, तो हम लोग सफरिंग पे फोकस करते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन उसके पीछे भगवान हमको कैसे हमको बचा रहे हैं। उनका जॉब बचा लिया, उनको जीवन उनका बचा लिया, तो दैट वाज अ वेरी नाइस एस्पेक्ट। और उन्होंने फिर उस पर फोकस करना शुरू किया कि थैंक्स लॉर्ड कि आप, और वो उन्होंने फिर वो जो था ऐसा चिट बनाना शुरू कर दिया कि ऐसे समय में मतलब क्या क्या चीज है जो मेरे जीवन में भगवान अच्छा कर रहे हैं जिसके लिए मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तो वो चिट बना बना के थैंक यू बोलते थे कि भगवान थैंक यू कि आपकी वजह से हम कोविड में होते हुए भी हमें कुछ नहीं हुआ, वी आर अलाइव। थैंक यू भगवान कि बहुत से लोगों का जॉब चले गया बट हमारा जॉब अभी भी है, थैंक यू। ऐसे तो हम लोग ऐसे ही, हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए कि जब भी हम लोग जीवन में कोई भी ऐसा कठिन समय आता है तो भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। जैसे भगवान ने वो सॉरी प्रभु जी ने वो जो 3 प्रेयर बोला, लुक बैक एंड थैंक कृष्णा, लुक अराउंड एंड फील कृष्णा, एंड लुक अहेड एंड ट्रस्ट कृष्णा। कि जब हम लोग हमारे जीवन में जो भी हुआ है तो उसको देख के हमको मतलब भगवान को थैंक करना है कि हम लोग कितना मतलब हम पे दया किया है भगवान ने हम लोगों पे। और फिर आजू बाजू देख के हम लोग को थैंक करना है हम लोगों को कि भगवान आप कैसे मतलब जो है हमारा रक्षण कर रहे हो, हमारा संरक्षण कर रहे हो। और फील करना है कि हाँ भगवान कृष्ण है हमारे आसपास और वो हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो फील आना चाहिए। और तीसरा जो उन्होंने कहा कि लुक अहेड एंड ट्रस्ट कृष्ण, और आगे देख के हमको वहाँ कि जरूर भगवान जो है हमारा रक्षण करेंगे। तो ये जो है हम लोग को हमेशा वो अवश्य रक्षी भी कृष्ण, वो जो एस्पेक्ट है शरणागति का, उसके ऊपर बहुत अच्छे हम लोगों को ध्यान देना है, फोकस करना है हम लोगों को। तो यही जो पॉइंट्स था कि हम लोग को ऑलवेज वी शुड थैंक कृष्णा कि क्या क्या चीज़ है हमारे जीवन में वो हमको थैंक करते रहना चाहिए, और उसका छोटा छोटा चिट बना के उसको डालते रहना चाहिए। और कभी एक दिन ऐसा निकाल के उसको देखते रहना चाहिए कि क्या क्या हमारे साथ हुआ था एंड और किन किन चीज़ों से भगवान ने हमारा रक्षण किया है। तो दैट वाज द पॉइंट प्रेम सखा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू लॉट ऑफ थैंक प्रभु। मतलब अपना जिंदगी में एक्चुअली ये चीज होना ही चाहिए। हमारा जब कोई मुश्किल जब होता है आगे, तब अगर वो मुश्किल से जब हम ओवरकम करते हैं प्रभु, तब ये चीज होते हैं, एक चिट्ठी छोटा से लिख के एक इसमें थैंक्स कृष्णा तुम हमको इसमें हमको बचाया है, तो वो जो उसमें डाल देना चाहिए। जैसे हम लोग पैसा जमा करता है ना, वो बचपन में है आटाना चाराना करके ऐसा जमा करता था, तो ऐसे हमारा जिंदगी में ऐसे भी होना चाहिए। स्टिल आई कैन रिमेम्बर प्रभु, इट वाज आई थिंक दैट 2015 और 16 जगन प्रभु ने एक्चुअली वहां पे सुबह क्लास देता था सिंधी हॉल में। लीला मतलब प्रभुपाद का लीलामृत था। लीलामृत तो इतना अच्छा से वर्णन करता था, मैं कई दफा कई जन से सुना, लेकिन ये प्रभु जो इतना अच्छे से वर्णन करता था, मेरा आंखों से पानी आता था प्रभु। मैं क्या है वो डेब्यूटी के पीछे बैठता था, मैं अपना हैंकरशिप निकाल के हम मुझता था, और जब हमको मालूम पड़ता था मतलब ये करता था मैं, मतलब कब जगन प्रभु का लीलामृत होगा, तो मैं उसी मतलब फ्राइडे को उठ के सुबह जाके पहले हम बैठ जाता था प्रभु है। और इनका जो लीलामृत सुनने के लिए, तो वही कहने का था
जो प्रभु इतना हम्बल है प्रभु, एक्चुअली हमको कुछ शेयर करने का था प्रभु, कभी टाइम नहीं है, अभी चला गया। मैं सोचा था कुछ बोलूं प्रभु को, है उनको थोड़ा से मतलब ये करना चाहिए था हमको, तो I'm एक्चुअली सॉरी प्रभु। तो जो भी है प्रभु, मतलब प्रभु को देखने के बाद आपने जब मतलब क्लास में जब डाला, शेयर किया, तो जगन प्रभु आ रहे, आई वाज सो एक्साइटेड, 2 दिन से मैं कब प्रभु को देखो। और ऐसा प्रभु का इतना एक अच्छा पर्सनालिटी है, प्रभु को देखने के बाद अगर ऐसे क्या प्रभु इतना हम्बलनेस इतना आ जाता है प्रभु, मैं क्या बोल, मैं शुरू से 2010 से मैं उनको जानता है, प्रभु बहुत इतना रिजर्व है, मतलब ज्यादा बात भी नहीं करता है। उनको जाके अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इतना आराम से बोला बैठ के हमको बहुत से सारे क्वेश्चन का हमारा मतलब जिंदगी का बहुत कुछ था वो हमको मतलब आंसर देता था प्रभु। हरे कृष्ण। और हमारा 2017 में जो हमारा जो दीक्षा हुआ था, तो उनका कारण से मतलब ये प्रभु से हमको बहुत हेल्प किया था, है। तो वही प्रभु थोड़ा हमारा जो रियलाइजेशन था, तो प्रभु को देखने के बाद बहुत मतलब फ्रॉम द हार्ट ऑफ माई बॉटम इतना अच्छा लगता था। जैसे हमको रोना है, प्रभु को कुछ बोलो जाके, आई मतलब प्रभु को जाके एम्ब्रेस करो, प्रभु आप बहुत महान है प्रभु। वही प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक यू, दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू। वो इतने अच्छे और इतने सिंपल, इतने हम्बल डिवोटी हैं, मतलब मैंने मतलब इतने सीनियर वैष्णव हैं वो तो, लेकिन उनका स्वभाव जो है इतना इतना नम्र है, ऐसा कि अगर जो मतलब सत्संग में कोई नया आएगा तो वो मतलब इग्नोर कर देगा प्रभु को। इतने इतने हम्बल है प्रभु ऐसे तो। बट जो कई सालों से जानते हैं प्रभु को, और हमारे तो मेरे तो शिक्षा गुरु हैं वो। हम लोग कई साल तक हम लोग प्रभु जी के घर जाके हम लोग भक्ति वृक्षा सुनते थे माता जी से। बहुत मतलब इतना क्या बोलते हैं ना, भक्ति अपना सही बढ़ाने, तो जो बोलते हैं ना कि ऐसे अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए, तो ऐसे ही हमारे जगन प्रभु हैं। तो एक्चुअली मैं बहुत डर रहा था प्रभु जी से पूछने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा हिम्मत जुटा के मैंने बोला, क्योंकि अपना एकदम छोटा सा ग्रुप है, ज्यादा लोग नहीं, 18-19 लोग हैं। तो फिर भी मैंने बोला कि चलो हिम्मत करता हूँ, और थोड़ा सा पूछा मैंने, और प्रभु जी तुरंत मतलब ऐसा भी नहीं बोला नहीं ठीक है, बोला हम लोग तो मिलते हैं करके। तो बहुत अच्छा जो है मतलब मुझे अच्छा लगा आज बहुत, इतना प्रभु जी से सुन के इतने सालों के बाद, उनसे मुख से सुन के आई एम रियली मतलब शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए। हरे कृष्णा। आई थिंक सत्यराज प्रभु जी ने भी हाथ उठाया था, सत्यराज तू और somebody। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज का क्लास जो था ना प्रभु जी, इतना मतलब बोल सकते हैं ना, अभी जैसे प्रदीप प्रभु बोल रहे थे तो रियलाइज हो रहा था प्रभु जी कि सिंधी हॉल में जब भी हम लोग बैठे थे, वेरी स्टार्टिंग ओल्ड डेज, एकदम स्टार्टिंग में प्रभु जी मेरे को याद है, तभी प्रभु जी का क्लास होता था सुबह मॉर्निंग में, भक्ति वृक्षा सुबह एकदम। तो प्रभु जी आते थे सुबह एकदम जल्दी, और प्रभु जी इतने हम्बल है कि मेरे को वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता प्रभु जी। कि एक बार क्या हुआ था, वो नया भक्त आया और एकदम ही नया है, मतलब उसको कुछ, और जगन प्रभु है ना, उनको वो पीछे चेयर पे बैठे थे एकदम, वो हमेशा चेयर पीछे बैठे थे, और वो लड़के ने चेयर मांगा प्रभु जी, और जगन प्रभु नीचे बैठे थे, चेयर दिया। तो आई मीन आई जस्ट शॉक प्रभु जी कि आई मीन वो तो नया बंदा था, उसको पता नहीं था, आई मीन तो उसका गलती, लेकिन बट ह्यूमिलिटी अगर हम लोग देखेंगे प्रभु जी, तो मैं वो टाइम से प्रभु जी को, वो एक चीज है ना प्रभु जी, कुछ चीज ऐसा रहता है ना, किसी वैष्णव का हम लोग देखेंगे, उसको मैग्नीफाई करेंगे ना, तो ये चीज है प्रभु जी कि इतने सीनियर है, वो कभी भी खुद को, हम लोग सिंधी हॉल में देखते कि बहुत डिवोटी है, लेकिन ये ऐसे डिवोटी है, इतना सेवा करते, इतना सेवा भाव, इतने नम्र, लेकिन वो कभी आगे नहीं है प्रभु जी, कभी हमेशा पीछे, एवरी टाइम श्रीला प्रभु की एवरी इसमें इसमें हमेशा देखेंगे तो प्रभु जी का नाम रहता है, तो ही इज सर्विंग यात्रा। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच। अभी तक तो मैंने ये सुना था कि पिगी बैंक लेकिन आज जो देखा नया टाइप का स्पिरिचुअल पिगी बैंक है हमारा। एंड होना चाहिए ये, जैसा हर चीज का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वहीं से एक्चुअली हम लोग ने सीखा है, लेकिन हम लोग उसको भूल गए थे, तो प्रभु जी ने हम लोग को बहुत अच्छे से याद दिलाया। तो यह वेरी नाइस सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रभु जी जो है हर चीज में मतलब इज पायनियर इन लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ उनका आइडियाज रहता है। एक्चुअली ये जो
शिक्षा प्रोग्राम वगैरह जो हम लोग कंडक्ट करते थे, प्रभु जी ने हमें उसमें एंगेज किया था सेवा में। तो ये सब जो है प्रभु जी का ही सब एक उनका था। लेकिन कभी मतलब वो ऐसा आगे वो कभी जैसे बोले ना कि वो इतने हम्बल है, वो कभी मतलब पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग। एंड लॉट ऑफ मतलब जो दामोदर देश में जो प्रोग्राम्स वगैरह होता है, जो आइडियाज होता है, तो प्रभु जी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन मतलब जो है इसमें। बट वो कभी अपना नाम नहीं आगे नहीं दी। सो हम्बल। थैंक यू एंड प्रभु सत्यराज। जी और एक चीज मुझे ऐड करना था प्रभु जी, कि अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब ग्रेटिट्यूड का जब भी वो पॉइंट बोल रहे थे प्रभु जी, और उसको एकदम डीपली बोल रहे थे ना प्रभु जी, तो अगर हम लोग देखेंगे तो प्रभु जी हर एक चीज अपने लाइफ में कितना श्री श्री राधा गोपीनाथ जी ने दिया है, गुरु महाराज और भक्तों का संग, अगर हम लोग देखेंगे प्रभु जी, तो ये जो प्रभु जी ने बताया ना वो कितना इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। तो ये ना मैं इनवाइट करूंगा प्रभु जी कि एक बैंक बनाऊंगा जो पिगी बैंक जैसा ही। एंड देन क्योंकि अभी तक मैं बचपन में मेरा पिताजी मेरे को हमेशा बोलते कि वो एक एक रुपया वो देते थे मेरे को, कभी कभी तो डाल कभी मैं डालता था, लेकिन ये जो बैंक है ना ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू सत्यराज। यस सूरत माता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू जगजीवन प्रभु जी, बहुत ही मतलब जैसे सब लोग कह रहे थे आपको देख के मतलब पूरा दामोदर देश याद आया। एंड सेकेंडली प्रभु जैसे बोलते हैं ना ज्ञान और विज्ञान, मतलब एक होता है नॉलेज एंड एक रियलाइज नॉलेज। तो प्रभु जी आपका हर एक शब्द इट वाज विज्ञान, मतलब आपका जो भी मतलब इवन फ्रॉम दामोदर देश देखा है प्रभु, लाइक द वे आपको देख के ही so it was all self realized knowledge and thank you, मतलब हर एक शब्द it was so मतलब अच्छा लग रहा था, hope giving and thank you so much। आपका दर्शन मिले, एसोसिएशन मिला, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। एंड सब जैसे कह रहे थे वी आर वेरी ब्लेस्ड प्रभु, जितना भी हमारा मतलब दामोदर देश में हमारा स्टडी हुआ है इसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। आप सारे कोर्सेज वगैरह कंडक्ट करते थे एंड इट वाज योर मतलब आप हमेशा ये रखते थे कि क्या क्या करना चाहिए सो दैट हम लोग सब लोगों को ये प्रभुपाद का बुक्स और ज्ञान हमको मिले और हम कैसे प्रचार करें। तो सुबह का प्रोग्राम एंड ऑल इज आपकी वजह से हमको मिल रहा था। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू गोपी। थैंक यू एक्चुअली कि प्रभु जी बहुत बहुत सीनियर हैं और बहुत सेवा में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं प्रभु जी, बट स्टिल उन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला। तो हम लोग कोशिश करेंगे, मतलब जब भी ऐसा उनका फ्री टाइम होगा तो विल भले थोड़ा टाइम लग जाए, मतलब 2-3 महीने, लेकिन एटलीस्ट रिक्वेस्ट करेंगे एटलीस्ट वो आके हमको एक बार जो है कुछ ऐसा अच्छा, जैसे आज का क्लास इट वाज रियली रियली वंडरफुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो हार्ट टचिंग। एंड ऐसे अच्छे इंस्ट्रक्शंस जब हम लोग मिलते हैं तो अपना भक्ति में भी जो है हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा भक्ति में वृद्धि होता है। तो विल डू दैट। थैंक यू सुरत माधव प्रभु एंड या प्रेम सखा प्रभु जी। प्रभु, I'm extremely sorry to thank you. I must have to let you know a lot of thanks. I forgot exactly. प्रभु आज एक्चुअली मैंने कभी बीच में सोचा था जो हमारा यहाँ पे जो भक्ति होता है दामोदर देश का जैसे भक्ति होता है उतना भक्ति नहीं होता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता था। तो मैं आपको उसीलिए हजारों दफा हमको थैंक्स आपको देंगे। आज आपका वजह से हमको अब दामोदर देश में हमको जाने का जरूरत नहीं है। हम जो भी आज दामोदर देश का भक्त लोग आए, सीनियर डेब्यूट्स आए, जो भी आए, आप सबको लेके आके हमको दर्शन दे रहा है। तो हम तो भगवान से वही प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं तो हम आप हमारा शिक्षा गुरु है, हम तो और कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान से एक प्रार्थना वही करता है हमेशा, भगवान आपको आपको फैमिली को मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं वो कर रहा है जो भगवान आप लोग को सबको अच्छा रखो और आप ऐसे प्रचार करते जाओ। भगवान सबको प्रचार करके भक्ति से ऐसा आप लेके आओ प्रभु, बस और कुछ नहीं प्रभु। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु, लॉट ऑफ थैंक्स प्रभु। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली जैसे मैं बोल रहा था ना कि जब मेरे से भी जब दुबई छूट गया था, दामोदर छूट गया था, तो मैं खुद इतना परेशान था कि इतना अच्छा संघ छूट गया, इतने अच्छे सीनियर वैष्णव लोगों से सुनने का मौका छूट गया, सेवा हमारा सब छूट गया। तो आई वाज फीलिंग दैट वो जो एक ना एक ब्लैंक एक लाइफ में आ गया था।
तो ये जो था हम लोग को वापस सब बोले कि थोड़ा जोड़ने का एक प्रयास किया हम लोगों ने, ताकि धीरे धीरे। और अभी जो मैं सही में बोला, हम लोग पिछले 2 साल से ही हम लोग ये जो कर रहे हैं, कोरोना का करुणा हो गया हम लोग। एक्चुअली वो एक कोरोना का एक थैंक्स बोलना चाहिए हम लोग, कि उसके वजह से हम लोग सारे जो भक्त हैं एक साथ जुड़ गए। और वहां पे थे दुबई में, तो हम लोग सिर्फ हफ्ते में एक बार मिलते थे, या तो बकरी रिक्शा में मिलते थे 2 या 3। लेकिन यहाँ पे डेली हम लोग सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम हम लोग को मिल रहे हैं। ज्यादा एसोसिएशन हो रहा है, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ रहे हैं हम लोग अच्छे से। मैं वापिस प्रभु जी से जब भी शेयर करेंगे वो मुझे देंगे। वो जो प्रभु जी ने बोला कि एक माता जी है जिसने प्रभुपाद जी के बुक्स कैसे पढ़ने हैं, उसमें से भी हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग वी आर नॉट जस्ट रीडिंग, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हम लोग उसको स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो और कैसे हम लोग अच्छे से ये स्टडी कर सकते हैं, विल सी दैट। और वो हम लोग उसमें से उस जो प्रभु जी ने बोला 8 या 9 पॉइंट है, हम लोग उसको इम्बाइब करने का कोशिश करेंगे। तो या थैंक यू प्रेम सखा प्रभु जी। ओके, एंड सत्यराज, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल का जो दिन था वो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मैं बोलना ही बाद में याद आ गया। प्रभु जी, कल अपने को शायद 2 साल हो गए गुड़ी पड़वा। अच्छा, कल बर्थडे था अपना साधु संघ ऑनलाइन। यस, अपने साधु संघ का बर्थडे था। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो तो रियली बहुत अच्छी बात है ये, कि एक्चुअली मतलब अब पता नहीं चला मेरे को 2 साल कैसा निकल गया। एंड इतना अच्छे अच्छे भक्तों से हम लोग जुड़ गए। और आज प्रभु इतने जो है मतलब हमारे साथ आए, और ऐसे हम लोग कोशिश करते रहेंगे। जैसे अभी परमेश्वर प्रभु जी भी आते हैं महीने में एक बार, तो हम लोग ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे सारे सीनियर डिवोटी से कि थोड़ा सा आके कुछ हम लोगों को शिक्षा दें हम लोगों को। तो विल लर्न फ्रॉम देम। सो थैंक यू सत्यराज फॉर रिमाइंडिंग दैट कि 2 साल पूरा हो गया हम लोग को साधु संघ ग्रुप को। एंड थैंक्स। और तभी हम लोग सिर्फ 3 लोग 4 लोग हुआ करते थे, माई सेल्फ, सत्यराज, सूरज माधव प्रभु एंड कुंजेश्वरी हाथ उठा रही है। यस, कुंजेश्वरी एंड अपने सत्यराज प्रभु। तो हम लोग थे, और धीरे 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 फिर हम लोग ऐसे सर्वदेव गिरधारी, यस सर्वदेव गिरधारी था। हम लोग 4-5 लोग मिलके स्टार्ट दैट। एंड आई एम हैप्पी। आज जो है हम लोग जो है इतने 19-20 लोग हैं, आई एम हैप्पी। एंड विल प्रे, और ऐसे ही हम लोग बढ़ते रहे, और ऐसे अच्छे से जो है हम लोग प्रभुपाद जी का बुक स्टडी करें। माय एम इज ओनली टू स्टडी प्रभुपाद बुक्स वेरी नाइसली। जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन हमने खत्म किया है, ना हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का बुक्स जो है हम लोग को, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना है हम लोग, विल डू दैट। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी साधु संघ ग्रुप का हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्णा। ये सत्यराज या हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, और एक चीज मुझे ऐड करना था। प्रभु जी, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया था ना स्पिरिचुअल पिगी बैंक, तो प्रभु जी उसमें है ना प्रभु जी, अपने हर एक डिवोटी का आपके लिए ग्रेटिट्यूड रहेगा प्रभु जी। शिष्य राधा, मैं तो शिष्य राधा जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा प्रभु जी, कि बिकॉज ऑफ यू हमें इतने बहुत शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन ब्रजप्रिया माता जी सत्यराज, एक्चुअली ये आई वाज सेल्फिश। मैंने मेरे लिए स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा एक सन छूट गया था ना, मुझे यहाँ पे कुछ डिवोटीज का एसोसिएशन मिल रहा था, कोरोना शुरू हो गया था ना, मैं मंदिर जा पा रहा था मैं। तो इट वाज जस्ट एक, मैं बोला कि कुछ तो अपना प्रभुपाद जी का बुक स्टडी करना है हम लोगों को। तो कैसे करेंगे ना, किधर जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। फिर सुना कि सब लोग थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मैंने भी दिमाग में आया चलो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन। और हम लोग 4-5 लोगों ने हम लोग स्टार्ट किया। सो इट वाज सेल्फिश मोटिव, मेरा अपना हेतु था कि आई वांटेड टू स्टडी बुक्स, जो मेरा छूट गया था, इतने सालों से छूट गया था। मतलब जब से दुबई छोड़ा था, आई वाज नॉट एबल टू ऑलमोस्ट फॉर 7-8 years। एंड थैंक्स टू यू ऑल, आप लोगों की वजह से आज मैं जो भी हूँ, मैं आप लोगों की वजह से हूँ। तो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट, कि हम लोग वापिस से अच्छे से मैं बुक पढ़ पा रहा हूँ, उसको स्टडी कर पा रहा हूँ। एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। हरे कृष्णा। या प्रेम सका प्रभु जी। प्रभु थैंक यू प्रभु, लॉट ऑफ थैंक्स। आपने जैसे अभी बोला
कोरोना हमको करुणा किया, तो हमने एक दफा रियली इसमें बीच में अपना शिवला प्रभु का अपना ग्रुप का मीटिंग थे, तो वो मीटिंग में शिवला प्रभु भी कह रहा था, कौन क्या कहते हैं नहीं कहते, लेकिन दिस इज माय ओपिनियन, ये मेरा ये है, जो कोरोना सबको, कोरोना के मतलब हम लोग को एक साथ जोड़ दिया कोरोना है। तो आपने जैसे अभी बताया, एक्चुअली ये बात सही है प्रभु, आज कोरोना का वजह से ये जी इतने सारे ऑनलाइन हम एक दूसरे से मिल पा रहे डेली। तब तो अगर सिंधी हॉल में क्या होता था, हफ्ता में एक दफा, और आजकल होते हैं प्रभु ये जो अपना ग्रुप में बना दिया अपने ऑनलाइन में, अभी डेली सुबह दोपहर को शाम को 3-3 दफा हम लोग मिल रहा है, बात कर रहे हैं प्रभु। तो कोरोना के मतलब रियली प्रभु हम लोग को कोरोना मतलब कोरोना कर दिया सब भक्त लोग के ऊपर प्रभु। थैंक यू प्रभु, वो शेयर करना था प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू। चलो अपना टाइम हो रहा है, क्विकली रूपिणी माता जी जो है आप लोग जानते होंगे, सॉरी मैं प्रभु को बताना भूल गया, रूपिणी माता जी भी अभी आने वाली है 11:30, तो वो क्लास लेगी, 2-3 श्लोक लेगी माता जी। तो क्विकली हम लोग रुकते हैं, और हम लोग अभी लेट हो गए तो हम लोग शिफ्ट भी नहीं कर सकते, अगर हम लोग ही होते तो हम लोग थोड़ा सा आधा घंटा शिफ्ट कर लेते, लेकिन माता जी वेरी मतलब उनको भी अपना दुबई में प्रोग्राम अटेंड करना है। तो क्विकली हम लोग 11:30 बजे मिलते हैं। I thank you all for such a मतलब स्पेशली जगजीव जगन्नाथ प्रभु जी का कितना अच्छा वंडरफुल क्लास दिया, एंड थैंक यू ऑल डिवोटीज कि आप लोग आते हो और इस प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल बनाते हो। सो थैंक यू ऑल, एंड विल मीट एट 11:30 क्विकली। आई थिंक जस्ट हम लोग नरसिंह आरती जो खत्म कर देते हैं, विल डू आवर नॉर्मल प्रोग्राम क्विकली। एंड सानिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु।